everyone, this is Sukirti. Welcome to my YouTube channel and welcome to Paris. And in Paris, we are starting right from its soul. So we are in Montmartre and French में इसको Montmartre कहा जाता है. Montmartre is the heart of Paris. And you know what? The fun fact is, it's actually a whole neighborhood sitting right at the top of the hill. And yeah, those views जो आप यहाँ से देख पा रहे हैं, they are totally worth the climb. So हम ऐसा कह सकते हैं, अगर पेरिस एक बड़ी सी सिटी है तो मोमार्ट इसका हार्ट है. This is where Paris kind of begins because यहाँ बहुत सारे आइकॉनिक विंटेज कैफेज हैं, स्ट्रीट आर्टिस्ट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे. If you really want to experience Paris city, don't just tick it off your list. Start from here in Montmartre. Come with me and let's explore it like a local. So I'm starting this vlog with 5 most favorite and handpicked cafes and food spots in Montmartre. You should not miss these food places क्योंकि basically बहुत सारे hype cafes और trendy cafes आजकल Instagram पे viral हैं. So कई जो viral और hype cafes होते हैं वो worth visiting भी होते हैं, but कई जो होते हैं those are a waste of money and waste of time. So इसलिए हमने properly 5 handpicked cafes यहाँ पे share किए हैं. So first one is this Tutti Sensi. ये एक डेजर्ट स्पॉट है. So if you have a sweet tooth या फिर आपको यहाँ के लोकल बेकरी आइटम्स या डेजर्ट ट्राई करने हैं, so you can go to this place. This has a cute little vibe. काफी अच्छे reasonable prices में आपको यहाँ पे ice creams and desserts मिलेंगे with macaroons. And the next one is the iconic Le Consulat. So ये नाम आपने काफी सुना होगा. You've seen it everywhere, but trust me, it's worth the hype. The aesthetic, the history, everything just feels so Parisian here. So we had late night dinner here. Then we have this Chez Marie. So Chez Marie name अपने आप में ही बहुत famous है and ये काफी iconic और hidden gem kind of place भी है. Here you can try the most famous tatin pie. So tatin pie is just the upside down version of apple pie. It's a French authentic dessert too. And moving on to the most famous cafe, Des du Moulin. I know इसका pronunciation काफी different है what you are reading here, but that's French, you know. This cafe is from the movie Amélie. So काफी famous movie है Amélie. काफी iconic scenes आपको उस movie के, even जो main character जो protagonist है वो खुद इस cafe में काम करती है. So इस cafe के काफी shots पूरी movie में आपको मिलेंगे. Plus ये बहुत ही authentic vintage kind of vibe देता है. If you love cinema, if you love movies and classic Paris vibes अगर आपको पसंद है, you can visit this cafe. You yourself will feel that you are in a French movie or something if you are here. So आपको एक cinematic सी feel आएगी. We had coffee and a French breakfast here and we also tried croissant and pain au chocolat here. So it's very good. So next one is this gourmet bakery called Philippe Conticini. So ये काफी अच्छी bakery है, gourmet bakery है. यहाँ पे बहुत ही crowded रहती है mostly. So you can take away some of your favorite desserts from here and हमने भी वही किया. हमने take away option choose किया. We took some croissant and pain au chocolat from here. If you have a sweet tooth, you should definitely visit this gourmet bakery. And हमने बाहर जाके फिर एक coffee shop थी, वहाँ पे we tried these croissant and pain au chocolat from Philippe Conticini bakery. And also last but not the least, honestly you should not miss on the local bakeries around Montmartre. So that's where you will find the most authentic and surprisingly very cheaper, affordable kind of bakery items like croissant and pain au chocolat. So local bakeries आपको ज़रूर try करने चाहिए. 1 या 2 euro के बीच में आपको each item मिल जाता है. So now moving on to some of the famous spots that we explored in Montmartre.
Apart from the food thing, we also visited some vintage places. So ये फोटो बूथ है जिसका नाम है फोटो ऑटोमैट, एंड ये विंटेज फोटो बूथ है मोनमार्ट में. सो आपको यहाँ पे आना चाहिए. यू कैन गेट योर रेट्रो काइंड ऑफ ब्लैक एंड वाइट फोटो स्ट्रिप्स क्लिक्ड फ्रॉम हियर. काफ़ी एक कीपसेक वाला मोमेंट होता है, आप अपने पास रख सकते हो वो फोटोज दैट यू हैव क्लिक्ड फ्रॉम हियर, पेरिस के मेमोरीज की तरह. सो या, ग्रेट फूड, आइकॉनिक कैफेज एंड दीज लिटिल एक्सपीरियंसेस, that's all what makes your Montmartre trip feel so special.